So in band theory, we learned that when atoms are brought together, their energy are splits. So you can see here, this is one electron state, one s electron state. But when more atoms are brought, then this energy levels be like this, because the interatomic space decreases. When interatomic state decreases, means when atoms come to closer to each other in solids, so energy levels are formed. More energy levels are formed, and the bands are formed. This is now band. This is continuous band. Okay, continuous energy levels. And this is single energy state. Okay, so when this is 1s, this is 2s. Okay, so as we go away from the nucleus, so for example nucleus is here. Okay? As we go away from the nucleus, the energy states of electron, they form different bands inside the atom, inside the solid. Okay? So solid के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो मिलके एक बैंड बनाती हैं, ठीक है। तो उन बैंड्स में हमने पढ़ा था कि there are two kinds of band and a one energy gap. Okay? So हमने ये कहा था कि हमारे पास जो बैंड्स होती हैं, तीन किस्म के मटेरियल्स होते हैं। एक मेटल होते हैं, okay? Now we have three kinds of materials: metals, metals. These are metals and semiconductors and insulators. Okay, so in metals, there is no energy gap. Valence band and a conduction band, they overlap over each other. Okay, so electron from this valence band can easily jump into conduction band. Okay, because when electrons jump into conduction band, they can easily flow through the solid, or they can freely move in conduction band. Okay, so in metals, the conduction band and the valence band are overlapping, and in semiconductors there is a small energy gap. This is small energy gap. Okay, so at room temperature, few electrons jump into conduction band and the holes are created into uh, valence band. Okay, so in semiconductors there are both hole considered as a positively charged particle carrier, charge carrier, and a electron is considered negatively charged electron. So still there are two kinds of semiconductors, pure and
impure. Okay, so pure semiconductor has same number of holes and the same number of electrons. Okay, and in insulator, energy gap is larger than pure semiconductor. So it requires a huge energy to make it conductor. Okay, so that's was theory, band theory. So what we learned in band theory, that whenever atoms in a solid are brought together close to each other, then they form bands inside the solids, and these bands we categorize in two kinds. One is conduction band and other is valence band. Valence band is highest filled, completely filled band, and a conduction band is a band in which electron can move freely. Okay, there is a little influence from the nucleus in conduction band because it is more distant away from the nucleus. Okay, today we will learn about uh, doping. Okay, so there are two kinds of doping: n-type doping and a p-type doping. So actually, doping. What is the meaning of doping? Doping means mixing impurity. Doping means impurity to pure semiconductor. Okay. To make it more conductive. To make it more conductive. Okay. So actually, there are two semiconductors: intrinsic semiconductors, intrinsic semiconductors, and extrinsic semiconductors. Okay. So there are two kinds of semiconductors. One are intrinsic semiconductor and the other are extrinsic semiconductors. So these intrinsic semiconductors are known as pure semiconductors, means pure silicon atoms. Okay, so pure silicon atoms means which has no any other element that we have mixed, means no impurity, जिसमें impurity कोई भी ना हो, pure हो. Pure semiconductor को हम कहते हैं intrinsic semiconductor, और extrinsic semiconductor हम कहते हैं वो सेमीकंडक्टर जिसमें आपने कोई impurity मिक्स किए. तो जब when you mix an impurity into extrinsic semiconductor, you make it more conductive. तो इसे कहते हैं डोपिंग. तो डोपिंग का मतलब क्या है? when you mix an impurity into intrinsic semiconductor, then that conductor
becomes more conductive. We want to make it more conductive. मतलब क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें जितने होल्स होते हैं, नंबर ऑफ होल्स इन प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज इंट्रिंसिक. प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो, प्योर सेमीकंडक्टर, in pure semiconductor number of holes is equal to number of electrons. Okay? So both are equal. So it is not conductive, means it acts like a insulator. Okay, there is a very small tiny current. Okay, small charge carriers. Okay, so जो प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब आप उसे कंडक्टर, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो, तो हम उसे प्योर सेमीकंडक्टर को हम बनाना चाहते हैं एक कंडक्टर. Okay, so if you want to make it conductor, what you will do, you will do doping, means mixing an impurity. You will mix an impurity. Okay, you will mix an impurity. Okay, so doping means to mix impurity into pure conductor, pure semiconductor. Okay, so there are two kinds of doping. One is n-type doping and the other is p-type. Okay, so you have, when you dope, for example, to make it n-type. N-type means uh, that material in which number of electron greater than number of holes, means negatively charged number is greater than positively charged holes. Okay, number of holes and a number of electrons. Okay, so number of electron must be greater than number of holes in n-type doping. So we will mix, for example, if we have, this is a silicon atom. Okay, so silicon material, in silicon material there are 4 electron, each has 4 electrons. Okay, each has 4 electrons. Okay, in the valence shell. So if we replace one atom, for example, this is silicon. Silicon has 4 valence electron in the outer shell. So if we want to remove this one atom with another pentavalent atom, okay, so we mix a atom from another element, say for example phosphorus. We added phosphorus. Phosphorus has 5 electron in the outer shell. Okay, so it has 5 electron in outer shell. Okay, so we mix here this atom, that is phosphorus, whose valency is 5 electron. Okay, so this is phosphorus. Okay, this is silicon, this is silicon, this is silicon. So what will happen, this phosphorus has 5 electron in the outer shell.
So 4 of the electron will make a bond with 4 neighboring silicon atom. So 4 silicons, 4 atom will make a bond with 4 neighboring atom. Only one electron will remain free inside the solid. So there will be large number of phosphorus atom that we have mixed in silicon crystal, means we have replaced many silicon atoms with uh, a phosphorus atom, and all atoms contribute one electron, extra electron. Okay, so that electron has negative charge. Now number of positively charged are less than number of negatively charged. Okay, so electrons are more here in this n-type material than uh, positively charged atoms. So okay, so we call it as a n-type material. Now we have mixed, and this is known as n-type. So in n-type, majority carriers, majority charge carriers are electrons. Electrons. So that is known as n-type material. Yeah. And in p-type material, so in n-type we always add pentavalent atom to the silicon, pure silicon, and its number of electrons larger than number of holes. Okay. And in p-type semiconductor, okay, first I want to show you the band structure of n-type material. Okay, so how band structure of n-type material. Okay. So n-type material, you know that this is, for example, valence band, and this is conduction band. Okay, so when we add, this is, we are discussing n-type band structure. Okay, n-type. Okay. So this is valence band. So when you mix in impurity atom, for example, we added phosphorus, phosphorus atom. So here phosphorus atom donate one electron. Each phosphorus atom donate one atom, one electron, one electron to pure silicon crystal. Pure silicon crystal. Okay, so we call phosphorus here as a donor atom. Okay, so phosphorus is a donor atom. It donates electron to the pure silicon. Okay, so actually phosphorus make here, give it a new states. These states are known as donor states. These donor states are near to the conduction band. That state is known as
donor state. So now these donor states have electrons. Okay, and these electrons can easily now jump into conduction band. So when we edit an impure atom, there is phosphorus, and the phosphorus has one electron more than silicon atom, because silicon has 4 electrons in its outer shell, and phosphorus has 5 electrons in its outer shell. So one of the electron is donated to the pure silicon. As a result, it becomes an n-type semiconductor. So in n-type semiconductor, now number of charge carriers, negatively charged carriers electron, is greater than number of holes. Okay, there might be some holes in n-type, but these holes are minority carrier in n-type, because due to temperature, when temperature, there is a room temperature, there might be few holes in the valence band. So in n-type conductor, holes are minority carriers. Holes are minority carriers. Okay, so that was band structure of uh, uh, n-type material. Okay, and now we will discuss p-type material. So in p-type material, if we have a pure silicon, this is silicon, pure silicon. Okay, so we add an trivalent atom, and that trivalent atom has 3 electrons in its outermost shell. Okay, so for example, aluminum, if we add aluminum, aluminum has 3 valence electron, means 3 electron in outermost shell. Okay? 3 valence electrons. So when we replace one of the few atoms, for example, this atom we replace with an aluminum atom. Okay? So we replace here aluminum atom. This is aluminum atom. Okay, and these are silicon atoms. Okay? So when we put a mix an impure atom, that is aluminum atom. Aluminum atom has 3 electrons and it is outermost shell. Okay, so it can make a bond with 3 silicon atoms. Okay, it can make a bond in 3, but it has one vacant place. It has one vacant place. Okay, for example, there might be a silicon atom and it makes a bond with that atom, but there is one vacancy, empty place. That vacancy, now electron can move through that vacancy. That vacancy where electron is not present, that is known as hole. That hole has positive charge. Okay, so in p-type material, there are large number of holes as compared to number of electrons. So number of holes
greater than number of electron. Okay, so in p type, therefore we name it p type. P type means the material in which there are large number of holes is compared to number of electrons. Okay, so we now will discuss this band structure. Okay, so band structure, of p type. Okay, so you know that in semiconductor there are valence band and a conduction band and an energy gap. Energy gap is also known as forbidden gap, the gap in which electron cannot exist. Okay, so holes are positively charged, uh, means vacancies, they are not protons. Okay, so valence band in valence band, now for example, when you add an impure atom that is trivalent, because here you add a trivalent atom. Okay, so trivalent atom can have ability to steal an electron. इसके पास ability है कि वो मतलब steal कर सकते हैं electrons. तो electrons की इसके पास ability है, मतलब electron can क्योंकि आपको पता है कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की उसके पास एबिलिटी है, इट कैन स्टील 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, so there is a vacancy, positive charge. Okay, so we call it as a acceptor atom. तो यहाँ पे ट्राइवेलेंट एटम जो हम ऐड कर रहे हैं, जो यहाँ पे कौन सा एटम हमने ऐड किया, अल्यूमिनियम. तो अल्यूमिनियम एटम को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर एटम. इट इज एन एक्सेप्टर एटम, means it can accept an electron, means electron can now easily flow. Okay, so this is aluminum is a acceptor atom. Okay, so when we add an acceptor atom, actually we create energy levels. These are known as acceptor energy levels, and these energy levels are near to the valence band. Okay, उसमें जो हमने पिछले जो एन टाइप हमने डिस्कस किया, उसमें जो आपकी जो डोनर एनर्जी लेवल थी वो कंडक्शन पेन के करीब थी. नाउ इन दिस केस ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, उसमें डोनर एनर्जी लेवल थी. एक्सेप्टर एनर्जी लेवल सो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है, ये इट हैज एबिलिटी to accept the electron. Okay, so now electron from the conduction band, sorry, valence band, can jump into the acceptor level. Okay, so when electron will jump into acceptor level, so there will be more number of holes in valence band.
Okay, so number of holes greater than number of electrons. Okay. So we were discussing band structure of p-type. So in p-type, this is valence band, this is conduction band. Okay. So there is an acceptor level. ठीक है. So acceptor level में मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आते हैं एक्सेप्टर लेवल में. ठीक है. सो इट हैज होल्स. इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एक्सेप्टर लेवल में आते हैं तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं वैलेंस बैंड में. ठीक है. तो ये आपकी जो वैलेंस बैंड है, ये जो आपका पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स जो होंगे, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और नंबर ऑफ होल्स को हम कहेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके. Number of holes are majority carrier because there are large number of holes created inside the p type. और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं मतलब ड्यू टू टेम्परेचर. तो इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें क्या कहेंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स. इलेक्ट्रॉन्स आर minority charge carriers because they are very, their number is very less. Okay. So now we will discuss p-n junction. p-n junction. Okay. So we have discussed two kinds of material, p type and n type. Okay. So what happens when we join p and n type to each other? तो क्या होगा जब हम इनको फैब्रिकेट करें, इन दोनों को ज्वाइन करें, p टाइप को ज्वाइन करें n टाइप से. ओके. सो क्या होगा अगर हम p टाइप मटेरियल, एक p टाइप मटेरियल है, ठीक है, दिस इज p टाइप, और दूसरा हमारे पास n टाइप है, दोनों को ज्वाइन करें. ठीक है. सो so when we join these two kinds of material, p type and n type material, so p type material has holes. Okay? So it has holes. Okay. And n type material has electrons.
So when we join p type and n type material to each other, electron will jump into p type and holes will move towards the n type. Okay, that is known as diffusion. This is known as diffusion. Okay? So diffusion takes place whenever there is a difference in concentration. तो इसमें concentration सबसे ज्यादा किसकी है? इसमें होल्स की concentration है, ठीक है, और इसमें ज्यादा concentration किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है. So there is a concentration gradient. तो मतलब ज्यादा concentration से कम concentration वाले पार्ट में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो मूव करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन जहां से मूव करेंगे पी टाइप की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और होल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है. बट दैट विल नॉट बी मींस फॉर लॉन्ग टाइम. क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब फर्स्ट व्हाट हैपेंड कि फॉर एग्जांपल ये आपका यहां से कुछ होल्स, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इसके पास होल्स ज्यादा है, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है. तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है, यहां से माइग्रेट करके इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, और यहां से कुछ होल्स इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे होल्स आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे होल्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा होल्स है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. लेकिन इसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है इस साइड में नहीं आ सकेंगे, और ये जो होल्स है इस डायरेक्शन में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज इन पॉजिटिवली चार्ज को रिपेल करेंगे. तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज होल्स है दे विल नॉट मूव further to the n type, and these electrons will be repelled by these electrons. okay? तो क्या होगा कि आपका एक बैरियर बन जाएगा, एक किस्म का यहाँ पे आपका जो है मतलब पोटेंशियल बन जाएगा, कि ये जो रीजन है इसे कहेंगे हम पी एन जंक्शन. वो पॉइंट जहाँ पे एक जंक्शन बन गया, जहाँ पे हमने दोनों को कंबाइन किया, तो वहां पे क्या हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल थे, जैसे ये था एक पॉजिटिवली चार्ज, ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है, तो इस साइड में आपके पॉजिटिवली चार्ज आ गए पार्टिकल, और इस साइड में आपके नेगेटिवली चार्ज आ गए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा हो गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये इसे कहते हैं पीएन जंक्शन. और पीएन जंक्शन के अंदर जो होते चार्जेस इसके अंदर नहीं होती, ये इसके एंड में चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है. इसे इसलिए हम डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं, ठीक है, डिप्लीशन रीजन, ठीक है. अब डिप्लीशन रीजन क्या हो गया कि आपने ये जो पीएन जंक्शन बनाया, पी और टी एन टाइप को आपस में मिक्स किया, बनाया, मतलब उसको फैब्रिकेट किया, उसको कंबाइन किया, तो क्या हो गया कि आपका ये जो पीएन जंक्शन है दैट क्रिएट्स अ पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एंड पॉइंट पे इसके जो जंक्शन है, जंक्शन के एंड पॉइंट्स पे एक पे आपका पॉजिटिव चार्जेस है और दूसरी पे आपकी नेगेटिव चार्जेस है. तो दोनों चार्जेस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और आपको पता है कि पोटेंशियल V का फार्मूला कौन सा है? V बराबर होता है E इंटू डी, ई डॉट डी एल. वेयर एवर देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ देयर विल बी अ पोटेंशियल. तो इनके जंक्शन पे एक पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक है. तो जंक्शन पे जो
जंक्शन पे पोटेंशियल जो होती है वो होती है बैरियर पोटेंशियल। वो पोटेंशियल that prevents the charge carriers to move further। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल जो मतलब आगे इलेक्ट्रॉन्स को, जो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए एक रीजन से दूसरे रीजन, और होल्स माइग्रेट कर गए मतलब डिफ्यूज कर गए दूसरे रीजन में, तो उसके बाद जो है बैरियर पोटेंशियल बन गई, और बैरियर पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव। ठीक है, उस बैरियर पोटेंशियल का सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन मटेरियल के लिए, सिलिकॉन जो डायोड, सिलिकॉन से जो ये पीएन जंक्शन डायोड से बने हुए हो, उसके लिए 0.7 वोल्ट वैल्यू है, इतना वैल्यू है उसका बैरियर पोटेंशियल का। ठीक है,